Hello students, today we will continue chapter 10 Surfing Net. In our previous class we have discussed the importance and uses of internet and what is email. Today we will discuss about what is email address and how you can create email ID. So when you create an email account, you get an email address to which people write mail to you. सिमिलरली जैसा आप मेल या पोस्ट करते हैं लेटर, वैसे ही ईमेल इलेक्ट्रॉनिक वे है कोई भी लेटर पोस्ट करने के लिए। तो इसके लिए वैसे आपको सेंडर और रिसीवर का एड्रेस चाहिए होता है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको ईमेल एड्रेस चाहिए होता है जिसमें से आप मैसेजेस या मेल सेंड और रिसीव करें। एंड एवरी ईमेल अकाउंट हैज़ अ यूनिक ईमेल एड्रेस विच मीन no two people in the world can have the same email address. So हर एक ईमेल अकाउंट एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी दो लोग नहीं होंगे जिनका सेम ईमेल एड्रेस होता है, क्योंकि ये अपने आप में यूनिक होता है। So now I will tell you how you can create your first email account. Here we are making an account on Gmail. I have searched Gmail. After that you will find various options. Just click on create a Gmail account. After that it will directly take you to this page, and here you can click on create an account. After that you will find a Google form where you need to fill your details, first name, last name, username, whichever you want, because no two people in the world can have the same username. So you have to make sure your email ID is unique. Okay, after that just write one password which have to be more than 8 characters, and confirm the password. Again write that and go to next, and after that select all the agreement and your Gmail account is created if all the entries have been filled properly. आपको ये Gmail फॉर्म पहले फिल करना होगा। जब आपने सारी चीज़ें फिल कर ली और एग्रीमेंट साइन कर लिया और सारी चीज़ें सही से भरी हैं, तो आपका Gmail अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। I already have a Gmail account, so I am just going to Gmail, and as soon as I click on Gmail it will directly take me to my Gmail account. Here you will find few options like compose mail, inbox, start, sent mail, draft, all mail, spam, trash and contacts. So here this one is inbox. Here you will find all the received mail. It contain all the received mail. Each message header displays the sender name, subject line, time and date when the mail was sent, and sometime the size of the message. Here who has sent me message is here, and the subject is written here. As soon as I click on that, the main page is open. So now we will click on compose mail option. Here you can compose a mail, you can send a mail to someone. For that here are few options. In 2 you have to write the address of the person whom you want to send the mail, and CC in under CC stands for carbon copy. Here you specify the address of the person to whom you want to send a copy of the mail. Here you will write the email address of the person whom you want to send the copy. Fine. Next is BCC. BCC stands for blind carbon copy. It is also used for sending the copy of the mail, but the email address mentioned in this field are not visible to other recipients. BCC में भी कार्बन कॉपी ही जाती है, उस सेम मेल की कॉपी जाती है, बट जो ईमेल एड्रेस BCC में मेंशन किया जाता है वो बाकी रेसिपिएंट्स जो 2 और CC में हैं उनको नहीं दिखेगा. ओके, नेक्स्ट इज
subject, you can type the main idea of the mail in this field. जो मेन टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आप ये मेल भेज रहे हैं, उसका सब्जेक्ट वो आप यहाँ पे लिखेंगे. You can choose file from here and attach it to your mail. After that you can click on send. If you want to send it, click on send. If you want to save it as a draft, you can save it, and if you don't want to send this, you can just simply discard it. Sign out. Click this button to log out from the site once you have finished reading or sending the emails. ये साइन आउट बटन आप तब क्लिक करते हैं जब आपने सारी चीज़ें जीमेल से आप जो करना चाहते थे, कंपोज करना चाहते थे या अपने मेल्स देखना चाहते थे, उसके बाद जब सारी चीज़ें कर ली होती हैं आपने, तो उसके बाद आप साइन आउट कर सकते हो.